Okay, so we are to study proteins. Proteins are the polymers of amino acid. Proteins are the polymers of amino acid, and we already studied about amino acid. Amino acids क्या होता है? Amino acids are the molecules in which there is one central carbon, there is a H molecule, there is NH2, that is amino group here, NH2, इसको भी ऐसे बना देते हैं, and this side COOH, acidic group, है ना? And there are 20 different type of Rs. Based on the types of Rs, there are 20 different type of amino acids. So I said there are 20 type of amino acids. 20 type of amino acids किस बात पे depend कर रहे हैं? That what are the Rs? These all things are same in all the amino acids. 20 amino acids have this part exactly same. There will be one central carbon. This is known as alpha carbon, one hydrogen. Then this side is NH2, that is amino group. This side is acidic group COOH. Okay. So this is what the amino acid is. There are 20 type of amino acid. Now depending on the R, there may be some acidic amino acid, there may be some alkaline amino acid, or there will be some neutral amino acid. Since I already taught you about the amino acids, I'm not going into the depth of the amino acid right now. Then we have studied that the amino acids are joined together by peptide bond. Oh, by pay attention. So peptide bonds कैसे होंगे? Peptide bonds are the bonds which are formed with the two consecutive amino acids. One amino acid NH, C double bond OH and R. Say for example, this is R1 plus NH2 C double bond OH, and this is R2. So there are two amino acids in front of us. This OH and this H comes together in the form of one molecule of water. Similarly, this will join with someone else. This is joined with someone else. So one amino acid will have NHCH. ठीक है? Then CO, and this side का तो आगे चला गया. No, second molecule से बनाना था. NHCH C double bond O, and here it was R2 and here it was R1. So this is known as peptide bond. This is known as PEPPIDE, peptide bond. And n number of such molecules may combine to produce polypeptide. Okay? If the one bond is existing between two amino acids, n number of such amino acids may combine, so it will be known as polypeptide. Can you see? Yes. How can you see here? In between, this is coming. You can see that side. Okay, so this is called polypeptide. Now, it is not as that all polypeptides are proteins, but all proteins are polypeptide. समझ गया? If suppose I write a word here, CPKRPJ, this you may call it as a word, but it may not have a meaning. Okay, it's a jumble, a collection of alphabets. Okay, similarly, number of amino acids may combine together in a jumble form, but they may not be a protein. To become a protein, functional protein, there may be certain type of amino acids which are combined in a particular sequence, in particular order, then that may become as a functional protein. Okay, so all the proteins are polypeptide, but not all polypeptides are protein. Sometimes there may be more than one polypeptide chain combined together to make a protein. Okay, so that we'll study little later. So अभी आपको ये बात समझ आ गया, that is all the proteins are polypeptide, but not all polypeptides are proteins. It is somewhat similar that it is only a jumble or a collection of alphabets, which is not a word, but all the words are a collection of alphabets. If I write here BOND, so these are also a collection of alphabets, but it has a meaning. It doesn't have a meaning.
ठीक है। इवन सपोज आई राइट अ वर्ड, कोई भी एनी वर्ड यू कैन से, जैसे एम्पलीफायर. Now, if I had to write amplifier, I had to use this alphabet in this order. अगर मैं F को उठा करके यहाँ लिया हूँ, will you still read this amplifier? कोई नहीं पढ़ सकता. If I take A here, this thing, any a small this thing variation, एक अल्फाबेट को आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, एक को हटा दिया, एक को रिपीट कर दिया, एक को मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, देन इट्स मीनिंग चेंजेस. आइदर मीनिंग चेंजेस और इट मे नॉट हैव मीनिंग. ठीक है, इट मे चेंज इट्स मीनिंग और इट मे नॉट हैव मीनिंग. व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड? व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ द वर्ल्ड? है ब्यूटीफुल. मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड वंस गूगल ढूंढ के निकालता है. ठीक है, तो एक वन ईयर ए पर्टिकुलर it was denoted as the most beautiful word, mother. Now अगर इसमें से m हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, है ना. और अगर ot भी हटा देंगे, है ना, तो बन जाएंगे her. और h भी इधर से r भी हटा देंगे तो बन जाएंगे she. मदर, अदर, हर, ही. और अगर इधर से er हटा देंगे तो बन जाएंगे moth, moth. ठीक है, तो यू सी मतलब हाउ मेनी वर्ड जस्ट बाय रिमूविंग रिप्लेसिंग वन और मोर अल्फाबेट द मीनिंग चेंजेस, है ना. सेम मे बी देयर इन केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड. इफ वन अल्फाबेट, वन पॉलीपेप्टाइड इज चेंज, वन ऑफ अमीनो एसिड इज चेंज, इट्स मीनिंग में चेंज. ठीक है, सो व्हाट वी सी इन द कलर ऑफ द आईज, the color of the skin, type of the hair, these all are errors because of the change in one or more amino acids. ठीक है, सो दैट पॉलीपेप्टाइड एंड उसका वो खबर कहाँ से आएगी, वो डीएनए के अंदर जो. तो इफ द डीएनए इज हैविंग रॉन्ग कोड, सो इट विल प्रोड्यूस रॉन्ग टाइप ऑफ आरएनए एंड द रॉन्ग आरएनए विल प्रोड्यूस रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एंड द रॉन्ग पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस may have different meaning. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ प्रोटीन्स आर ऑफ वेरियस टाइप. तो एंड प्रोटीन जो है दे आर ऑफ इनफाइनाइट नंबर. If you see in compared to the carbohydrate, monosaccharides were only how many types? Trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and heptoses. Only these many. And they used to combine to produce a handful type of polysaccharides. हमने पढ़े polysaccharides जो है वो भी गिनती के ही थे. कितने हैं? ग्लूकोज था, है ना, ग्लूकोज तो डाइसैकेराइड है ना. और लेकिन सॉरी मोनोसैकेराइड है. दो डाइसैकेराइड को हमने पढ़ा था, इज माल्टोज, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज. 6 कार्बन वाले. और पॉलीसैकेराइड में व्हाट वी स्टडीड वाज सेलुलोज. ठीक है, देन वी स्टडीड स्टार्च, देन वी स्टडीड ग्लाइकोजन, है ना, देन वी स्टडीड अमाइलेज. तो अमाइलोज, तो दीस वर द ओनली फ्यू, है ना. फैट्स की भी बात करेंगे तो दे आर ओनली फ्यू. लेकिन प्रोटीन जो है दे आर इनफाइनाइट इन नंबर. प्रोटीन जो है दे आर इनफाइनाइट. Every species has a different type of protein. Now we have seen that if my blood is given to him or his blood is given to me without tested, so sometime it may be cause of death to the person who is receiving blood. Now why it is so? Why a person died? Because our body has got specific type of antigen. Blood has got different type of antigen on its surface. We already studied about blood group, है ना. तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. तो इनमें से ब्लड ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन. ए बी के अंदर वो दोनों ही मिलते, ओ में उन दोनों ही नहीं मिलते. ठीक है, तो वो एंटीजन प्रोटीन है ना. सो वो एंटीजन प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर रहा है. नाउ आवर बॉडी आल्सो, सपोज इन माय बॉडी समवन एल्सेस किडनी इज टेकन और माय किडनी आई गिव टू समवन एल्स, जिसकी किडनी खराब हो गई, तो इट विल नॉट बी रेडिली एक्सेप्टेड. बॉडी रिकॉग्नाइजेस ये हमारा किडनी नहीं है. हाउ बॉडी रिकॉग्नाइजेस? हाउ WBC will recognize कि हमारा बॉडी नहीं, because every body has got a specific type of protein and if the protein is different, body once recognize ये तो हमारा ही नहीं, ये बाहर का है, इसको मार दो. ठीक है, and hence those kidneys will be damaged, है ना, disintegrated. तो इसलिए क्या आ रहा है, that is every
body has got different protein. Now you अंदाज लगा दुनिया में कितनी टाइप के species, and every species में more than several different type of proteins which are not found in others. So these are not common to the others. So that is why we say proteins are infinite, because 20 different type amino acids may combine in infinite orders. उनके नंबर्स कितने होंगे एक सीक्वेंस के अंदर? व्हाट विल बी द लेंथ? 20 अमीनो एसिड का, 21 अमीनो एसिड, 22 अमीनो एसिड, तो thousands of amino acids. Then what will be the order? How many times a particular amino acid will repeat? So there are infinite possibilities, and that is why there are infinite type of proteins. And उनमें से some protein are functional, some may not be functional, some may be simply polypeptide chain. So how proteins are functioning, that we'll study tomorrow.